Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to start with daily news analysis of the Hindu newspaper for 5th of Jan 2021. आप सभी का हार्दिक स्वागत है अर्पिता शर्मा क्लासेस में। मैं हूँ अर्पिता शर्मा, आप लोगों की एजुकेटर, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं 5th Jan 2021 का द डेली न्यूज़ एनालिसिस फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। नाउ टुडेज़ क्लास इज़ गोइंग टू बी अ रियली स्पेशल क्लास। आज की क्लास काफ़ी स्पेशल क्लास होने वाली है। डेली न्यूज़ एनालिसिस में टुडे वी आर गोइंग टू फोकस मोर ऑन दी प्रीलिम्स पार्ट्स। हम प्रीलिम्स पार्ट पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं आज की क्लास में, ठीक है। एंड ऑल्सो द क्लास PDF विल बी अपलोडेड ऑन माई टेलीग्राम चैनल सिंप्लीफाइंग UPSC विद ईज। लिंक इज़ गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो टेलीग्राम चैनल पे आपको क्लास का PDF भी मिल जाएगा जिसका नाम है सिंप्लीफाइंग UPSC विद ईज। लिंक इज़ गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डू click and join the channel so that you can get the PDF. Now the first important news that we are going to discuss is about the bird flu which has been confirmed in dead birds in Kangra region. So the migratory birds which were found dead at the Pong Dam lake in Himachal Pradesh. I am underlining this. Why? Because it is important for prelims also. ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दे कैन आस्क यू द लोकेशन ऑफ पोंग डैम लेक, ठीक है। आपसे पोंग डैम लेक की लोकेशन पूछ सकते हैं। वेयर इज़ इट लोकेटेड? इट इज़ लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। एंड हियर दिस डिस्ट्रिक्ट हैज़ टेस्टेड पॉजिटिव फॉर बर्ड फ्लू। सो अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर प्रीलिम्स दैट दे कैन आस्क इज व्हाट इज़ बर्ड फ्लू। प्रीलिम्स के लिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकते हैं बर्ड फ्लू क्या है। इट्स एन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस। ये टाइप ए वायरस है, नॉट टाइप बी और टाइप सी। इट्स अ टाइप ए वायरस। वी ऑल नो दैट वायरसेस आर डिवाइडेड इनटू सब टाइप्स। वायरस को ना दो सब टाइप्स में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोटीन्स विच इज़ अवेलेबल ऑन द सरफेस ऑफ द वायरस। सो टोटली देर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ वायरस, हेमाग्लूटिनिन एंड न्यूरोमिनिडास, ठीक है। सो देर आर 18 known HA that is hemagglutinin subtypes and 11 known NA subtype of virus, ठीक है। एंड दीज देर आर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ HA एंड NA काइंड ऑफ वायरसेस, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट H7N2 वायरस विच डेजिग्नेट्स एन इन्फ्लुएंजा virus subtype that has an HA7 protein and NA2 protein. H5N1 virus, N1 virus has an HA5 protein and an NA1 protein. This fact is important for prelims. इसको आप prelims के लिए याद रखिएगा, ठीक है। टोटल अभी हमारे H5 वायरस के ना 9 known subtypes हैं, which is H5N1, H5N2, H5N3, N4, N5, N6, N7, N8 and N9. These are the known subtypes of H5 kind of viruses. Okay, so what is avian influenza virus? It is also known as bird flu. इसको हम bird flu भी बोलते हैं, and it is a very contagious viral disease affecting several species of food producing birds. Food producing birds example can be turkey, it can be quails or chickens, etc. And it can be found in pet birds and wild birds also. Occasionally mammals including humans may also contact this avian influenza. So ये जो symptoms है ना humans में भी देखे जाते हैं as a kind of fever, cough, इस तरीके के symptoms होते हैं. It can also lead to sepsis with shock also. It can even lead to death. So avian influenza outbreaks can lead to devastating consequences, particularly in the poultry industry. This you have to remember. And right now na Kerala has been on high alert because of this influenza virus. इसके outbreak की वजह से अभी केरला को high alert में भी रखा गया है. Even when you look at Himachal Pradesh, it is the 4th state to report the cases of avian influenza virus. Then we have Rajasthan, Madhya Pradesh, Kerala is the first state. You have to remember the name of these states where this virus has been found right now. Okay, another important news is related to corporate farming. तो आपको ये न्यूज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. यू हैव टू स्टडी व्हाट इज़ कॉर्पोरेट फार्मिंग फॉर GS पेपर 3 एंड फॉर प्रीलिम्स, ठीक है. सो व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट फार्मर्स, नॉट द कॉर्पोरेट फार्मिंग. व्हाट इज़ कॉर्पोरेट फार्मिंग? So over here you can see corporate farming is the business based on agriculture. Specifically what is seen by some as the practices of would-be mega corporations involved in it. For example, we can also take the example of PepsiCo. हम यहाँ पर PepsiCo का भी example ले सकते हैं, ठीक है. It is also kind of corporate farming. Another important news is track social media to check pangolin poaching. Again it is important for prelims in GS paper 3. ये आपके prelims और GS paper 3 mains के लिए important है. Now the Odisha Forest Department
has focused on the need for strict monitoring of social media platforms to check pangolin poaching and trading. Poaching means illegal hunting. So this is a pangolin. We have discussed about a pangolin a lot of times in the past, also in our Hindu decoded classes. During the past few years, cases of pangolin poaching have been reported at regular intervals from different parts of Odisha. With the cyber revolution enabling widespread access to digital platforms since 2000s, consequently sizable chunk of wildlife trade has started taking place through social media. Social media के through illegal hunting plan किया जाता है, illegal poaching and trading plan किया जाता है. And in this particular news, the zoo which has been in the news is the Nandankanan Zoo. So this is important for GS paper 1 and prelims as well. Where is it? First of all, it is in Bhubaneswar in Odisha, and it is India's only pangolin conservation breeding center. This is a very important part. They can give you the name of 4 zoos. They will ask you which one of them host it is India's only pangolin conservation breeding center. It is Nandankanan Zoo, which is in Bhubaneswar in Odisha. So before we move forward, here's a small announcement for all of you. आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटी सी announcement है. Unacademy is starting new batches for UPSC CSE 2021, 2022 and 2023 aspirants from 11th of Jan 2021. 11 जनवरी 2021 से नए बैचेस Unacademy Plus लॉन्च कर रहा है. There are 3 batches. First is for 6 months batch, that is for 2021 aspirants. Second is the complete 1-year batch for 2022 aspirants, and 2-year batches for 2023 aspirants. The batches will be in both Hindi, English and bilingual language. English में भी होंगे batches, हिंदी में भी होंगे और bilingual language में भी होंगे. And NCERT batches also have been launched by Unacademy, which are again starting from 11th Jan. Again, they will be in Hindi also, bilingual also and English language also. Complete NCERTs from class 6 to 12th will be covered. ठीक है. Plus Unacademy has launched for all of you the combo packages. Unacademy ने आप सभी के लिए combo packages launch किए हैं, wherein now you can get subscription for GS and optional. ठीक है. And the code that you can use to get 10% discount is Sharma20. कॉम्बो पैकेज में अगर आप आइकॉनिक का पैकेज लेते हो या प्लस नॉर्मल प्लस सब्सक्रिप्शन का पैक लेते हो, ऑप्शनल प्लस जीएस, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप यूज़ करते हैं कोड Sharma20. ठीक है. दिस इज द कोड बाय यूजिंग विच यू कैन गेट 10% स्ट्रेट अवे डिस्काउंट. सो लिंक इज गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हरी अप बिकॉज द बैचेज आर स्टार्टिंग फ्रॉम 11th of Jan. पहले ही आप अपनी सीट बुक कर लीजिए, क्योंकि हम लेने वाले हैं हिस्ट्री के कोर्सेज. बाकी सभी एजुकेटर्स, टॉप एजुकेटर्स वहाँ पर बैचेज लेंगे. यू कैन apply now using this code Sharma20. You will be getting 10% extra discount on your subscription. So link is given below. Do not wait for the deadline and subscribe today. आगे बढ़ते हैं. Next news is repeal law permitting seizure of livestock, says Supreme Court. So Supreme Court has asked the center to delete Prevention of Cruelty to Animals Rules 2017. Now, this law allowed capture and subsequent confiscation of livestock from people who dependent on these animals for livelihood even before they were found guilty of cruelty towards them. So this was the law. That is why Supreme Court has said you have to delete these provisions. Why? Because even the crime has not been approved in court, and still you are confiscating their cattle on which their livelihood, farmers' livelihood is dependent. दैट इज़ रॉन्ग. अगर उनका कोई गुनाह कि उन्होंने लाइफ स्टॉक के साथ कोई बदसलूकी करी है, ये गुनाह प्रूव नहीं होता, आप उससे पहले ही उनकी लाइफ स्टॉक को, उनके कैटल को आप बंदी बनाकर कॉन्फिस्केट करके रख रहे हो, अलग रख रहे हो उनसे, जिनके वजह से उनकी लाइवलीहुड चल रही है फार्मर्स की, वो गलत है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट, only a person convicted of cruelty can lose his animal, right? That is why Supreme Court has given this order. So what are the challenges or problems in this order, in this verdict of Supreme Court? A farmer, a livestock owner or a cattle trader loses his animals before being found guilty of charge of cruelty. That was the issue. That is why Supreme Court passed this verdict. Supreme Court ने verdict इसलिए पास किया क्योंकि इशू ये आ रहा था कि भाई जब तक गिल्टी प्रूव नहीं किया है आपने कि इसका कोई क्राइम सिद्ध नहीं किया है, तब तक आप उसके लाइफ स्टॉक या कैटल को नहीं बंदी बना सकते. दैट विल बी क्रूअल्टी टुवर्ड्स दैट फार्मर ऑल्सो, राइट? सो टू एड्रेस दीज इशूज, सुप्रीम कोर्ट हैड वार्नड the central government to carry out these provisions in future. Another important topic, biggest vaccination program to start. So following the approval of 2 vaccines
दो कोविशील्ड और कोवैक्सीन 2 वैक्सीन्स अप्रूव की गई हैं. ठीक है. प्राइम मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड दैट वर्ल्ड्स बिगेस्ट inoculation drive against COVID-19 is set to begin in India. So Prime Minister was addressing the scientists at National Meteorology Conclave, and he said that it must be ensured that the made in India products not only have a global demand but also a global acceptance as well. He dedicated National Atomic Timescale and Bharatiya Nirdeshak Dravya Pranali, that is Indian Reference Material System, to the nation. Now, what is National Atomic Timescale? This is important for prelims. It generates Indian Standard Time with accuracy of 2.8 nanoseconds. And what is Bharatiya Nirdeshak Dravya Pranali, Indian Reference Material System? It would help industry to make quality products in sectors like heavy metals, pesticides, pharma, textiles by drafting a certified reference material system. Also, another important point is what is National Meteorology Conclave. So this conclave took place in 2020. It is being organized by Council of Scientific and Industrial Research, National Physical Lab in New Delhi, and the theme of this year's conclave was Meteorology for the Inclusive Growth of the Nation. This is again important for prelims 2021 exam. So this was all for today. I hope you enjoyed this session. I hope आपको ये session अच्छा लगा, समझ आया. Also the class PDF will be uploaded on the Telegram channel, and do not forget to use code Sharma20 on your Unacademy Plus subscription. Link is given below in the description box. Thank you.